Hello everyone, I am back again with another episode of Social Record presented by Humans of Giving. Today we are in conversation with Sandesh Bhingarde, the founder of Team Vision. So Team Vision is an NGO which work for visually challenged students by providing them readers, writers, audio recording, personality development programs, English teaching courses, counseling, and have taken many other initiatives to showcase the talent of such students. Team Vision has provided more than 3,000 plus writers and readers in Maharashtra, Delhi, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Chandigarh, Haryana, and Ahmedabad. That's huge number, by the way. It has also been awareing the society about eye donation through campaigns. सो फर्स्टली इतना एक सांस में बोलना ही जब इतना ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, आपने इतना ज्यादा काम किया है. It's a great work. Like before starting this discussion, Sandesh, firstly congratulations to your whole team for doing such great work. And actually it's too much, and it's such a wonderful knowing people who is working on this field, because we generally don't find people who is doing something for visually challenged people, and that's great. um, but as you work for such students who are visually challenged, what major struggle you have came across in your journey of educating people for the rights of visually challenged people? Okay. So, majorly that these visually challenged students come from the different kind of backgrounds, right? So this matters a lot when it has come to the education. So a lot of time it happens that parents are not that much involved in the education or the learning of the student. So in that case, they lack with a lot of exposure. So they are very limited with their typical friend group, friend circle, and typical group of people. So what they lack majorly in this throughout process is exposure. And this is the biggest challenge that we thought of giving a trigger to. And this is what have led us to form some different courses or some different activities, which will basically give them an exposure. Because what I believe that for the holistic development of a person, that person should have exposure to all the different kinds of what we can say the what, all the different kinds of things which are happening around. And a lot of time, like we watch a movie, so they can also watch movie, but sometimes they can't get the part which is a action part, or which can be like a silent part of the story, right? So they need a kind of push or a kind of what we can say a voluntary support from our end, or something like a audio description where they'll get also exposure to what is happening in backgrounds. They don't understand the background story, so sometimes it happens that they just hear and they just make some assumptions कि ऐसे हुआ होगा शायद, but they are not sure with what exactly happened in the background. So I think this is the biggest challenge that we also face in our day-to-day life, that creating exposure is very much required. राइट. संदेश, जब इस तरह के चैलेंजेस, मतलब जब आप फैमिली से बात करते हो, तो आप फैमिली को, क्योंकि सबसे मेजर ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम आती है इन बच्चों के साथ, वो ये होता है कि पेरेंट्स ही एक्सपोजर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें Hmm. लगता है कि समवेयर दे आर disabled, so they cannot achieve anything in their life, so they don't want to invest also. So क्या आप इस तरह की स्टोरीज के अक्रॉस आए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर वर्किंग सिंस लास्ट 4 years, so I'm sure कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी पेरेंट्स के साथ, तो उसको कैसे ओवरकम करना है और आप कैसे अवेयर करते हैं? Yes, so it happens with us like a lot of time. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स को ऐसे हमेशा लगता है कि क्या फायदा है बच्चे को पढ़ा के, बिकॉज आगे जाके भी आपको कुछ ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर अभी भी हम क्यों इन्वेस्ट करें हमारा पैसा, टाइम और सारी चीजें इन्होंने, राइट? So what for this purpose, like we came up with some activities like the lantern. So the lantern is our event, which is a cultural event. So that gives a platform to all the visually challenged artists to come together and perform their skills, perform their art forms. So this is somewhere where we invite the parents of the visually challenged students as well, and we just give them an exposure again that okay, your child can do a lot, right? If you give them a push, or अगर आप उनको एक थोड़ा सा
कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी या फिर उनको कुछ थोड़ा सा आप स्कूल में भेजोगे तो उन्हें बहुत सारी नई चीजें वो सीख सकते हैं और ऐसे नहीं है कि कर नहीं सकते। तो बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज होते हैं इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हम सारी ऐसे नहीं कहेंगे कि सिर्फ विजुअली चैलेंज के पेरेंट्स को, पर बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स है या आम लोग हैं जो भी हमेशा एक किसी ब्लाइंड इंसान को अगर देखते हैं तो हमें एक दया की भावना आती है कि अरे ये बेचारा, इसको दिखता नहीं है, राइट? बट वी नीड टू टेल देम दैट ओके, दैट पर्सन इज नॉट बेचारा, वो भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो जैसे आप अपनी आम लाइफ जीते रहते हो वैसे भी वो इंसान भी जीते रहता है। और उनको आपके सिर्फ दया की जरूरत नहीं है, आपकी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है। जहां पर भी जरूरत होती है तो आपको उन्हें एक थोड़ा हाथ देना जरूरी होता है और आपके साथ लेके जाना जरूरी होता है, आगे बढ़ना जरूरी होता है। सो दिस इज व्हाट वी डू। और ऑल्सो वी डू अ रेगुलर मीटिंग्स। सो इन रेगुलर मीटिंग्स की आइडिया ही ये होती है कि हम सब साथ में मिले, बैठे और बात करें। एंड इन दैट वी बेसिकली इनवाइट सम visually challenged person who have done something extraordinary work, और maybe उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके आज कुछ अचीव किया है, तो हम उन्हें बुलाते हैं और उनके साथ कुछ इंटरैक्टिव सेशंस करते हैं जिसमें उनकी जर्नी हमें जानने मिलती है, उनका स्ट्रगल हमें पता चलता है। और वो सारे पेरेंट्स के लिए एज वेल एज विजुअली चैलेंज और हमारे वॉलंटियर्स के लिए एक मोटिवेशनल सेशन बन जाता है। तो इस तरह से इसको हम कोशिश करते हैं टैकल करने। राइट। जैसा कि आपने बोला पिटी के बारे में कि हम लोग जब भी देखते हैं हमें एक पिटनेस लगता है, उनकी तरफ सहानुभूति आती है। मेरा Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हेन वी टॉक अबाउट सच डिसेबल्ड पीपल देयर इज अ सॉर्ट ऑफ पिटनेस व्हिच फॉलो, which is something naturally it comes, but do you think this pity feeling or sahanubhuti towards them is relevant? So, like being always pity is not, like we always say though that they require empathy and not sympathy, right? So this is, there is a gray line between this empathy and empathy. Sympathy जब आप दिखाते हो तो आपको सिर्फ ऐसे लगता है कि ओके इनको ये नहीं आता, वो नहीं आता, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या जो भी है। बट जब आप एम्पैथी की बात करते हो तब आप जाकर कोशिश करोगे जानने की कि ओके अगर इसको नहीं दिखता तो इसके लिए लाइफ कैसे होगी। सो आर, like are we trying to understand their life or we are just considering कि okay इसको दिखता नहीं। It is very easy to say that, right, कि इस बंदे को दिखता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। But are we going a step ahead and trying to understand कि okay इसको नहीं दिखता तो फिर ये अपनी जिंदगी कैसे जीता होगा, अगर इसको नहीं दिखता तो ये इसका डे टू डे लाइफ में क्या करता होगा, कैसे करता होगा। I guess this kind of push or kind of switch is required where you need to like wear the shoes of that person and understand that what this person is going through and what can you do for it. So this question is very interesting that बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कोई अगर ब्लाइंड इंसान दिखे तो हम जल्दी से जाते हैं और उनको मदद करने की सोचते हैं कि चलो इनको हाथ पकड़ के हम लोग रास्ता क्रॉस कर दे या कुछ कर दे। बट आर वी गोइंग एंड आस्किंग देम कि अगर उनको ये मदद की जरूरत भी है क्या, राइट? सो हम ये हमारे ही दिमाग में होता है कि ओके इसको जरूरत ही है, गरज ही है कि इसको मदद ही चाहिए, राइट? सो दिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट। इट इज वेरी बैड बट अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस दैट कि बहुत सारे लोग किसी विजुअली चैलेंज को देखते हैं तो उनको ऐसे एक अजम्पशन बन जाता है कि ये अच्छा गाता होगा और ये ट्रेन में कुछ तो गा के एक तरह से बोलने जाए तो भीख मांग के पैसे कमाता होगा, right? Which is a very general assumption that we make, and a lot of our visually challenged friends have gone through it when they travel in train. तो उन लोगों को ऐसे ही लगता है कि ये तो मतलब सिर्फ गाएंगे और कुछ पैसे कमाएंगे। So we need to change our way of looking at them because there are a lot of examples कि जहाँ आज बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीख रहे हैं। तो हमें ये थोड़ा नजरिया बदलना जरूरी है, मुझे लगता है, देखने का सामने वाले को कि हम ये दिमाग से थोड़ा सा हमें हटाना चाहिए कि उसको गरज ही है या फिर उसको जरूरत ही है हर चीज की। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ दैट पर्सन रियली नीड्स हेल्प, this should be the approach that we should create, I guess. संदेश, सिंस आपकी जो टीम विजन है वो काउंसिल भी करती है ऐसे बच्चों की, बच्चों को, तो उनका जो डिप्रेशन और एंजाइटी होता है कि उनमें कुछ खामियां हैं तो उसको कैसे ओवरकम करे, सो आपका टीम
कौन सी ऐसी इनिशिएटिव लेते हैं, या हमें जो व्यूअर्स सुनेंगे उनके घर में भी कुछ बच्चे होंगे जो विजुअली चैलेंज होंगे, तो आप क्या बताएंगे कि कैसे इन बच्चों के एंजाइटी और डिप्रेशन से डील करने के लिए क्या क्या चीज को करना चाहिए? व्हाट आर द मेजर रोल वी शुड प्ले? Okay, so the biggest role that we play at Team Vision is that listening to them, which is very important. I feel कि हर बार ऐसे होता है कि हम हम ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि जो जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए होती है, राइट? सो वी डोंट गिव द अदर पर्सन टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस कि वो क्या बताना चाहते हैं. ये बहुत बड़ी चीज शायद हम लोग ने इस पूरे दौरान सीखी है कि अगर कोई भी बच्चा हमसे बात करना चाहता है तो हम पहले उसे सिर्फ मौका देते हैं कि आप बात कीजिए, आप खुल के जो भी आपको बताना है आप बताइए. फिर हमें जहां जरूरत लगती है वहां हम उनको कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या करना जरूरी है, कैसे करना जरूरी है, किस तरह से करना जरूरी है. तो इस तरह से हम इन सारी चीजों पे काम करते आए हैं. और उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है. ऐसे नहीं होगा कि एक बच्चा रैंडमली आएगा और हमसे सारी बातें करना शुरू कर देगा, राइट? सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. तो हम पढ़ाई के बारे में तो बात करते हैं उनके साथ, हम लोग उनके लिए रीडर्स राइटर्स तो प्रोवाइड करते हैं. उसी के साथ ही साथ हम बीच बीच में मिलकर कहीं घूमने जाते हैं, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम मूवीज देखने जाते हैं, हम ट्रैकिंग करते हैं बच्चों के साथ. यहाँ पर जब गणपति फेस्टिवल होता है तो हम उनके साथ मिलकर सारे पंडालों में घूमने जाते हैं. तो उनकी बहुत जिज्ञासा बढ़ती है इससे. उनको जानना होता है कि ओके, अगर हम इस पंडाल में गए तो यहाँ पर ये डेकोरेशन किया है, तो अगले पंडाल में क्या अलग होगा, right? So they can't see, but they have this all curiosity with them always, and this helps you build on it, right? So it is not possible to like understand any person in a day or in a month. It's a long term, we can say a long year long process where we meet them regularly, we talk about them, then बहुत सारे विषय निकल के आते हैं जब फिर वो खुलकर बात करने की कोशिश करते हैं. तो मुझे लगता है सभी के लिए एक पहली चीज तो ये हो सकती है कि आप उनसे दोस्ती कीजिए, तो वो बहुत आसान हो जाता है कि वो आपके साथ कुछ चीजें शेयर करें. और आप सुनिए, जब कोई कुछ बता रहा है तो आप अपने एडवाइसेस ना दे सीधे सीधे, बिकॉज आई ऑलवेज से दैट आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप समझते होंगे कि उनकी क्या कैसी परिस्थिति है, क्या चैलेंजेस है. आई ऑलवेज से आई कांट अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. I can definitely say that because the person who has been watching everything, I can see everything. I can't understand what blindness is, right? So this is the one sense that we need to develop, that हम एडवाइस देने की जल्दी ना करें. शायद इन बच्चों के साथ जब बात करते हैं उनको सुनने की कोशिश करें, उन्हें खुलकर बात करने का मौका हम दें. Right. Sandesh, as you have been working in this field since last 4 years, what do you think is the approach or mindset towards such blind or visually challenged people? So you're asking about the mindset of the general people around, or how is it like general वो people? जनरल पीपल एंड पेरेंट्स का भी जो अप्रोच होता है वो कैसा होता है? क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप आए होंगे ऐसे लोगों के अक्रॉस जो बोलते होंगे कि इनके लिए काम करके क्या ही होगा. तो जनरली भी बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं. सो इन जनरल आप बताइए सबको मिला जुला के कि आपको किस तरह के अप्रोच देखने को ज्यादातर मिले हैं? I would say there is a mixed approach. तो ऐसे होता है ना कि इसीलिए शायद हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, सारे एक्टिविटीज का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है. मतलब सारे उतने इक्वली इम्पोर्टेंट है. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ एक एक्टिविटी करें और दूसरी एक्टिविटी को छोड़ दें. सो द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जब हमें रीडर्स और राइटर्स की जरूरत होती है, तब जो लोगों से हमारी बातचीत होती है तो उनको, बहुत सारे लोगों को पहले तो ये चीज पता ही नहीं होती कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है, राइट? सो दैट वाज आवर फर्स्ट रियलाइजेशन. जब हमने ये काम शुरू किया तब हमें यही पता चला कि लोगों को मदद करने की इच्छा है, पीपल आर विलिंग टू सपोर्ट देम, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि ऐसे कुछ होता भी है. वो लोग काफी है जो बोलते हैं कि काम करके क्या ही होगा, या फिर कैसे होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम, एनर्जी, सब कुछ चीजें. But that is the problem, that they don't know that what these students can do, right? So we need to create some maybe some role models. जब वो बनेंगे तब शायद बाकियों को भी वो इंस्पिरेशन आएगा कि okay, they can also do.
And recently, abhi hum dekhne jaye to there are so many visually challenged friends who are working very nicely in like there are some are working as a banker, some are working as HR, some are working as like CSR professionals. So ऐसे नहीं है कि अभी कोई field is very invalid or something as such. But लोगों में ये definitely mindset है कि क्या ही कर लेगा, या फिर फर्स्टली वो बहुत पिटीनेस ही आ जाता है कि बेचारा इसको दिखता नहीं है या बेचारी इसको दिखता नहीं है. हम काफी बार हमारे कुछ दोस्त, अभी तो सब दोस्त बन गए हमारे, तो हम कहीं होटल में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो वहां के जो आजू बाजू में लोग होते हैं तो उनको भी बहुत बार ऐसे बोलने में आ जाता है कि यार देखो उस बेचारे को दिख नहीं रहा है. बट दे डोंट आइडेंटिफाई दैट दैट पर्सन इज आल्सो ईटिंग सो एफिशिएंटली एज यू आर, right? If that person, even that person can't see it, that person is eating very nicely, like उसको सारे टेबल मैनर्स पता है, वो आपको ठीक तरह से सारी कब हाथ धोना है, क्या करना है, कहाँ पे क्या रखा है, उसको वो भी पता है. Then what is wrong? So wrong is in our mindset somewhere that we need to come out of it कि okay they just can't see, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, right? So ये एक समझना शायद हम सभी के लिए. हाँ, that they are more than just being blind. उनकी भी बहुत capabilities है, definitely. And I hope you help those heroes come out strong. On this note, how is Team Vision trying to bring a change in the growth of such disabled students? Your programs and your vision. Correct. So basically, our aim is to make them independent in all possible sense. So we don't want them to be dependent anymore, be it on a writer, on reader, or any kind of volunteer or anything like that, right? So our idea is that we design activities keeping this in a center कि हमें उनको independent बनाना है. So हमारी कोई भी activity ऐसे ना बनी रहे कि जिससे उनका डिपेंडेंसी और बढ़ जाए शायद, right? So the very first thing is that they struggle a lot with finding writers for their exams. तो कोई भी जब एग्जाम आता है तब उनका टाइम राइटर ढूंढने में ज्यादा निकल जाता है ताकि उनको जब पढ़ना जरूरी होता है, एंड देन दैट लाइक रिजल्ट्स इन अ वेरी बैड रिजल्ट, और ये सारी चीजें होती जाती है. So our very first agenda now that we are working on is that the exam should get computerized. So अगर एग्जाम्स कंप्यूटराइज्ड होते हैं तो वो अपने आप से बहुत सारे अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसके इस्तेमाल से वो खुद कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं. सो फॉर दैट फर्स्टली वी आर वर्किंग विद ऑल द कॉलेजेस ऑफ मुंबई रिसेंटली एंड ऑल्सो द मुंबई यूनिवर्सिटी कि वो पहले तो एक पॉलिसी लेवल चेंज आ जाए, एग्जाम्स कंप्यूटराइज हो जाए. और ऑन द अनदर नोट वी आर ट्राइंग टू डेवलप आर लर्निंग सेंटर जहां पर हम इन स्टूडेंट्स को वो एग्जाम्स अगर कंप्यूटराइज हो भी जाते हैं तो स्टूडेंट्स को उतना ट्रेन करना बहुत जरूरी है, राइट? कि एग्जैक्ट ऐसे ही अगर रैंडमली एग्जाम कंप्यूटराइज हो गया और उनको बोल दिया गया कि आपको अब राइटर नहीं मिलेगा, आपको खुद से पेपर लिखना है, सो दैट विल नॉट वर्क. So simultaneously we need to do their skill building, we need to train them enough that they will be capable enough to crack those exams on compute basis of computer. So this is the one activity I can mention about ki jahan par we are trying to create some impact in their lives maybe. So we never know that this will happen. This is a long term process, of course. Some are the very policy level change, but at least on these grounds उनका skill building हो रहा है. So हम उसको इस तरह से देख रहे हैं कि ओके उनका ट्रेनिंग हो रहा है, स्किल बिल्डिंग हो रहा है, दैट विल क्रिएट सम जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. अगर उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग अच्छा बन गया तो उससे काफी करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं. And simultaneously we do some kind of workshops which are more related to soft skills या फिर एक ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्ड कैसे हो सकता है उनका, इसके ऊपर हम कुछ वर्कशॉप्स लेने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमने रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर वर्कशॉप लिया था, ऑनलाइन ही हुआ था वो. तो उसमें हम लोग बातचीत इसके ऊपर करते हैं कि अगर एक विजुअली चैलेंज पर्सन को किसी कहीं जाकर अपना एक प्रेजेंटेशन देना है या फिर इन जनरली आपको कहीं जाना है तो आपको किस तरह से प्रेजेंटेबल रहना जरूरी है. So this is very important that we need to trigger their mindset that even though that person can't see, the world is seeing you, right? So आप अगर सोचते हो कि मैं मुझे तो नहीं दिख रहा क्या फर्क पड़ रहा है, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं या कैसे भी चला जाऊं कहीं पर भी,
but they need to understand that the world is seeing you and they are judging you on your clothes, on your Right. everything. इसको कितना भी अगर सोचने जाए तो हम वो नहीं रुका सकते, राइट? लोग उसी तरह से आपको जज करते हैं। तो आप कहीं अगर किसी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो आपको इसी तरह से परखा जाएगा कि आप कितने वेल ड्रेस्ड हो, आप कितने वेल मैनर्ड हो, और आपके पास अगर कुछ चीजें हैं तो आपको उसके बारे में पता है क्या। So, ये सारी चीजों का एक जो छोटा, ये हमें लगते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें, बट हालांकि देखने जाए तो हम सभी के लाइफ में बहुत मायने लगते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ विजुअली चैलेंज पर्सन इट मैटर्स अ लॉट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो हम लोग उन्हें उसके जी उस जगह पर थोड़ा सा स्किल बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। जी जी Sandesh, there's a lot to talk about in this whole thing, but since we are running out of time, so what is your message to our viewers? So there is a lot again to tell our viewers as well, Yeah, I but know that. so but what I would say to everyone is that the firstly that we need to bring this approach. The approach is very much important, that I feel that look at them as a visually challenged, but it is just a visual challenge. So just remember that they are just blind, but they can Right. do rest of the things. They can hear, they can sense, they are all of their senses are very good, well active, and they can do each and everything that as a sighted person we can do. So firstly, build that approach. Whenever you meet any visually challenged person, speak to them as a friend or as a general person that you meet. You don't need to, people hesitate a lot, maybe a lot of times this happens that people hesitate a lot that how should I approach a visually challenged person? मैं कैसे बात करूं उनके साथ? So we have to tell them, right? It is okay. They are also a person. Human being ही है वो भी. आप generally जैसे बात करते हो सभी के साथ, वैसे ही आप उनके साथ बात कर सकते हो. And Right. secondly, so our whole organization works on a very voluntary basis. So we always say that we always require a manpower because, for example, we are trying to connect our visually challenged friends with our volunteers as a mentor. So a lot of times they require a minor helps. Like for example, if a visually challenged person wants to do shopping, उनको कुछ कपड़े खरीदने हैं, so it is very difficult for them to identify clothes और ये सारी चीजें करना, right? So a lot of times these students approach us and they ask कि can you help me with shopping, मुझे कुछ ऐसे ऐसे इस कलर का खरीदना है, या फिर मेरे पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, right? So they have those a lot of questions. So I would always say that you can volunteer with organizations. I would not say कि सिर्फ हमारे organization के साथ volunteer कीजिए, but आप किसी भी organization के साथ volunteer कीजिए, which is very much required somewhere. मुझे हमेशा लगता है कि आपको Definitely. सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी आ जाता है कि मैंने किसी को आज मदद की है, किसी के चेहरे पे एक स्माइल लाई है, और उसके लिए, उस इंसान के लिए तो इट विल बी लाइक अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग. Yeah. Thank you so much, Sandesh, for joining our session and talking with us. It's so great, to know people like your team who are working for such people, because it's really important to aware and to work on this motive as well. Thank you so much, and I hope कि आपका आप लोग हीरोज जो आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो प्रेजेंट करें सोसाइटी को, सो दैट उनको देख करके लोग इंस्पायर हो और आगे बढ़ने की चाहत रखें. And please ask our viewers to like, share, and subscribe the video if they like. Sure, definitely. So I think you guys have created this wonderful platform. This is the Humans of Giving because I guess we somewhere हम जब काम करते रहते हैं तब हमें इसी चीज की जरूरत होती है कि ये काम और लोगों तक पहुंचे, ये अवेयरनेस पहुंचे. And this is the amazing step that you guys have taken. So congratulations to all of you for creating such a platform first of all. And definitely it's a request to everyone to just visit this channel and enjoy. I guess the every session will be such amazing sessions with all of you. I I was really hope. of it. Yeah, I was just going through some of the earlier sessions and it were really great. And it is always motivating for us as well, right?
to understand that okay, कोई तो काम कर रहा है, अच्छा लगता है देख के इन सारी चीजों को, और आप That. create कर रहे हो तो it's really amazing. So definitely. Thank you so much. Thank you so much, Sandesh, and thank you so much for joining again. And I hope कि आगे चल के कोई भी ऐसा इनिशिएटिव हो आपका, या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें हम लोग जुड़ सके, तो जरूर आगे हम लोग साथ में काम करेंगे और जुड़ेंगे. And please keep doing such great work. Thank you so much. Thank you so much, Parul.